which is basically the biodegradation of organic compounds या हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन जो है उससे मिल के बने होते हैं, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज द नेम इंडिकेट दीज आर बेसिकली द नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स है दीज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स, so they could have nitrogenous compounds such as terpenoids, they could have phenolic compounds, they could be these compounds जो natural products जिनको हम कह रहे हैं, these could be phenolics, these could be terpenoids, these could be nitrogenous compounds, these could be aromatic hydrocarbons। तो xenobiotics क्या है? Xenobiotics are basically biologically active molecules that are foreign to an organism। ठीक है, ये xenobiotic chemicals ऐसे होते हैं कि जो biologically active molecules होते हैं और organism किसी भी organism के लिए वो as foreigner होते हैं। ठीक है, जिनको जो है दैट कुड xenobiotics में आप जैसे फॉरनर कैसे कह सकते हैं कि जो बाहर से इन्वेड करते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिवली भी जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल xenobiotics में हम कौन से कंपाउंड्स आ सकते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स अगर हम देखें तो वो हर्ब्स को किल कर रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे भी होते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स है, फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स है, दिस ऑल आर बेसिकली xenobiotics। द यूज ऑफ टर्म xenobiotic विद रिस्पेक्ट टू बायोडिग्रेडेशन शुड बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, अगर हम जो है वो बायोरेमिडिएशन की एक्टिविटी से कहें तो xenobiotics की टर्मिनोलॉजी उस तरह से यूज नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स आर सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक अटैक थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स जिसमें आपके पास BTEX आ जाते हैं। BTEX में अगर हम देखें तो वो आपके पास बेंजीन है, टॉल्वीन है, इथाइलिन बेंजीन है या जाइलिन है। फिर इसी तरह से PH आपके पास आ जाते हैं जिसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से PCBs हैं जिनमें आपके पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स आ जाते हैं, ये क्लोरिनेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, हैवी मेटल्स जिनमें आ सकते हैं, या न्यूक्लियर वेस्ट आ सकते हैं। फिर इसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल वेस्ट दैट इंक्लूड्स ट्राइजीन, DDT। ठीक है, अब इन पोल्यूटेंट्स की फेट क्या है? फेट ये होनी चाहिए कि दीज पोल्यूटेंट्स शुड बी मिनरलाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, और दे शुड बी ट्रांसफॉर्म टू अनदर कंपाउंड दैट मे बी टॉक्सिक और मे बी नॉन टॉक्सिक। फेट इनका ये होना चाहिए या तो इनकी कंप्लीट मिनरलाइजेशन हो जाए और ये कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ट्रांसफॉर्म होके या फिर ये टॉक्सिक कंपाउंड्स में, या ट्रांसफॉर्मेशन में बोथ वेव्स पॉसिबल है। ठीक है, समटाइम्स हम ये भी कह रहे थे कि जैसे मैंने आपको बायोरेमिडिएशन में पढ़ाया भी था स्टार्ट में, कि हो सकता है कि आप जो एक्टिविटी करें उसमें जो पोल्यूटेंट है वो कन्वर्ट हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास जो है वो लेस टॉक्सिक या नॉन हैजर्डुअस में कन्वर्ट हो सकता है मोर हैजर्डुअस हो जाए, लेकिन उस वक्त उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। फिर इसी तरह से जो थर्ड फेट इसकी हो सकती है, या फिर ये एक्यूमुलेट हो जाए विद इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट जो फेट है दैट इज मिनरलाइजेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड फेट इज द एक्यूमुलेशन। सो बायोरेमिडिएशन क्या करती है कि बायोरेमिडिएशन इज बेसिकली पोल्यूशन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, दैट यूजेस डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू कैटलाइज द डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म्स। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन्स जो कि हम कह रहे हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are basically made of carbon and hydrogen as the name indicate। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। द मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स on the earth that are found naturally occurred in crude oil। they are major जो एनर्जी हम कह सकते हैं कि they are major energy प्रोड्यूसर्स, या ठीक है एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इन टूडेज अर्थ increase in industrialization and development has seen an increased use of hydrocarbons that containing fuels like petroleum and its products, diesel and natural gases. Due to this unprecedented increase in using fuels, accidents and pollutions that related to this is increasing in an alarming pace.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन भी है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब डेवलप हो गई हैं तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। उन हाइड्रोकार्बन्स का अब हम जो है हम इंडस्ट्रीज डेवलप करते जा रहे हैं और उन इंडस्ट्रीज में जो आपका पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है या जो डीजल यूज़ हो रहा है या नेचुरल जो गैस यूज़ हो रहा है, जो फ्यूल की कंजम्पशन है दैट इज़ क्रिएटिंग दैट इज़ एट अलार्मिंग लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर उसके बाद क्योंकि ये जो आपके जितना फ्यूल है ये आपका ट्रांसपोर्ट भी हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस सारी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन्स और वो ऑयल स्पिल भी हो जाता है। अगर हम इंडिया में ही बात करें तो 2010 में मुंबई में ऑयल स्पिल हुआ था, ठीक है, विच लेफ्ट वास्ट एरिया ऑफ द अरेबियन सी दैट आर पोल्यूटेड विद लीक्ड ऑयल एंड टॉक्सिक वेस्ट ऑफ अबाउट 100 आउट ऑफ 250 कंटेनर्स वर डम्प्ड इन द सी फ्रॉम द शिप। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर हम कहें polluted due to hydrocarbons have toxic, fatal and disastrous effect on the aquatic, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज ऑन द एटमोसफेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तो अगर इस तरह के जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे होते हैं तो उनके एक्वाटिक लाइफ पे भी, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे भी और इवन एटमोसफेयर में एरियल पार्ट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा डिजास्टर इफेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑयल स्पिल होता है, लीकेज इन पाइपलाइंस कैरिंग क्रूड ऑयल एंड गैस activities, the accident during production, refining and transport storage of petroleum and its byproducts. Every year, about 35 million barrels of oil are carried across the oceans. ठीक है, making aquatic environment vulnerable to pollutions from oil spills, leakage that threatens the aquatic or marine life all over. ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जो है 35 मिलियन बैरल्स हैं ऑयल के जो कि हम ओशंस में उनकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, और वो आपका जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है दैट इज़ वल्नरेबल टू द पोल्यूशन फ्रॉम द ऑयल स्पिल या फिर लीकेज हो सकते हैं। अब इस लीकेज की वजह से या आपका जो है वो ऑयल स्पिल की वजह से आपकी जो एक्वाटिक लाइफ है या मेरीन लाइफ है वो हर वक्त एक थ्रेट में, एक खतरे में है, ठीक है। लैंड पोल्यूशन ड्यू टू इफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, untreated toxic waste from the refineries are one of the main causes of groundwater contamination. Overall reduces the productivity of the agricultural lands. अब अगर हम इफेक्ट्स देखें पोल्यूशंस के, ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम हाइड्रोकार्बन का इफेक्ट देखें तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगे बोथ फ्लोरा और फाना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की वजह से आपका जो है वो फ्लोरा और फाना, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर बिकमिंग इंडेंजर्ड, ठीक है, और उनकी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो लॉस होना शुरू हो गई है, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन दैट are the major effects of the pollution especially that are related with the hydrocarbons. फिर इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ है वो भी हैजर्डस हो रही है और उसके डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हैं जो कि ह्यूमंस जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जब भी ऑयल स्पिल होगा, लीकेज होगी, always that is associated with your economic loss. अब हम अगर डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस देखें कि ह्यूमंस पे कैसे जो है वो डिट्रीमेंटल इफेक्ट है, तो दैट बेसिकली दीज हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे मे लीड टू कैंसर, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन कॉज इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, दे कैन ऑल्सो कॉज asthma and other kind of allergies. Most hydrocarbons are carcinogenic to the lungs, so PHAs can cause prenatal defects, reduced birth weight, developmental deficiencies, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम कंपोनेंट्स हाइड्रोकार्बन के पोल्यूटेंट्स के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो आपके पास जो है वो उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें अल्केन्स आते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, फिनोल्स आते हैं या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, ठीक है।
अब ये जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये लॉस क्या है कि इसमें जो है 5% तो नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, फिर उसके बाद 35% आपका शिपिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, 10% टैंकर्स डिजास्टर्स की वजह से आ रहा है, और 5% जो है अनडिफाइंड है कि उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आ रहा है। फिर इसी तरह से फ्लुएंट्स है, एटमॉस्फेयर ड्रिलिंग है, उससे भी 45% तक जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। There are different kind of common techniques that are being used for the removal of pollutants. That includes to remove the pollutants from the contaminated site of the soil or water. Several physicochemical methods have been developed for the decontamination of the site. Such methods are not highly expensive but also labor intensive. मतलब उसमें लेबर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, देर इज इनहेरेंट रिस्क ऑफ aggravating the situations and spreading of the populations. Common technologies that are being used are evaporation, burning या dispersion या washing, ठीक है, और but it is also as is the problem with these techniques, they often lead to incomplete decomposition of the pollutants. Thus a process of natural yet simple and cost effective method of hydrocarbon removal is desired in today's world. So the technique that are used to remove oil spill contaminations are landfill burials, ठीक है, and incinerations for safe disposal. Other there are the pyrolysis, gasifications, but in most cases the byproducts are have some negative shocks on the environment. Disadvantages associated with these physicochemical methods for the removal of for the removal of the hydrocarbons, ठीक है, because some are such as these are so much expensive, they need more labor, there are high chances of contamination leaching, that the contaminants may leach down, or they can spread or aggravate the site of pollutions. Some other leads to the incomplete decomposition of pollutants. So these are some disadvantages that are associated with the bioremediation that are associated with these physicochemical methods for the removal of hydrocarbons. So the latest technology or latest requirement is the development of bioremediation for the removal of hydrocarbons. So bioremediation, as you all know, is the basically utilizing the living organisms, microorganisms, for the degradation of pollutants and contaminants from the environment and then transform into less or non-toxic form. Bioremediation of hydrocarbon pollutants can be done by both microorganisms and by the plants. For the microorganisms, we know use the bioremediation, and for using that process with the help of plants, that is known as the phytoremediation. Bioremediation is basically based on the ability of microorganisms to degrade the hydrocarbons into components that can be taken up by other microorganisms as nutrient source, or they can safely return to the environment. Then the degrading organic components are converted into water, carbon dioxide, or other inorganic compounds. So this is the bioremediation. As we have already discussed in our previous lectures, there are two types of bioremediation. That could be in situ bioremediations, they could be ex situ bioremediations, there could be different kind of bioreactors which are involved. Strategies for bioremediation as we have discussed about bioaugmentation, biostimulation, and bio venting. Okay, these are different kind of strategies that are being used for the bioremediation of the hydrocarbons. In case of bioaugmentation, when where non-oil degrading bacteria are added to help the supplement the existing microbial pollutions. In this method, microorganisms that can either be indigenous or genetically modified are added to the site of contamination, and they start the process of bioremediation. In case of biostimulation, different kind of nutrients are added to the site of contamination or site where you want to do the process of bioremediation. Some effective remediation is not possible for indigenous microorganisms, natural substances. So we provide some different extra nutrients so that enable them to enhance their metabolic activity, and ultimately that leads to the bioremediation of the hydrocarbons.
hydrocarbons. Advantages that are associated with this kind of bioremediation is that as this is natural process, so it is widely accepted by the public and as an effective way to remove the hydrocarbon side. Second is the biodegraded compounds are harmless and that can be incorporated into the environment. Or bioremediation also helps to degrade the pollutants on the site without causing any additional hazard to the environment. And it is also relatively inexpensive compared to the other physico-chemical methods for the used for the process of bioremediation of the hydrocarbons. ठीक है, they could be used for cleanup of hazardous waste product. However, there are some disadvantages that are also associated with the bioremediation process. For example, this process is limited to the compounds that are biodegradable. If there is any compound in the environment which is not biodegradable, then the process of bioremediation is not effective for those chemicals. Second is the growth of microorganisms. Further, bioremediation of the pollutant site is often very specific and demanding. Site containing many different types of contaminants in various phases. For example, there could be solid phase, there could be liquid, or there could be gaseous phase. We need special type of treatment, and it is also a time-consuming process that may need extra pre-treatment before they can be degraded by the microorganisms. So, another technique which we can use is the genetically modified organisms, and this is very common circumstances in a oil polluted site. Indigenous microorganisms are unable or do not act their full capability to degrade the pollutant. So, there is a need to develop genetically modified organisms. These organisms basically have developed because of their genetic modification. They develop the ability to degrade the pollutants. They can increase the yield of breakdown of the pollutants. In this technique, appropriate genes for the production of proteins or enzymes are inserted into the microorganisms, and then genes expressed produced through the enzymes and proteins will degrade the contaminants. In 1971, General Electric and one of its employees, Anand Mohan, applied for a US patent genetically modified Suruna species that has a appetite for oil. This new organism had plasmid that contain a gene and that can degrade the different kind of hydrocarbons. First GM to be released for the field trial was designed by the University of Tanzania in collaboration with Oak Ridge National Laboratory. The release in a contaminated soil site. That strain was incorporated into vector, which is naphthalene catabolic plasmid. And another way to remediate the hydrocarbons through the process of bioremediation is the phytoremediation. Phytoremediation is also a new technology in which utilize the living green plants for the removal of the removal or degradation or accumulation of the contaminants of the pollutants from the pollutant site, from the water, or from the sludge or sediment. It is a low cost cleanup technique using different kind of solar energy via plants. It is useful for the sites that are shallow with low level of the pollutants and site where vegetation is used as a final closure of to the polluted site. Phytoremediation is basically gaining popularity due to its aesthetic advantages and long-term capability, while maintaining mechanisms for long-term is not feasible. There are different kind of mode of actions of phytoremediation that includes phytovolatilization that convert the metals into volatile forms and subsequently release them into the atmosphere. Phytodegradation, they can be a breakdown or transform the metals by different kind of enzymes within the tissues. They can also do the process of phytofiltration, sequestration of metals from the water. They could uptake the they could uptake the contaminants, then rhizosphere degradation. That kind of degradation occur in the root area. Phytostabilization, they basically what they do, they limitize the mobility and availability of metals in the soil by the roots, and they could also do the process of phytoextraction in which they accumulate the metals into the shoot.
So hydrocarbon basically pollution is removal is a basically real problem. A better understanding of the biodegradation mechanism of the microorganisms is needed and is of utmost significant that will help transform the pollutants into less toxic and less harmful byproducts. Microorganisms aided elimination of spilled oil from the soil and water surfaces and subsurfaces is very cost effective and simple process that can be popularized for bioremediation process. Plants also contribute towards bioremediation of hydrocarbon pollutants by utilizing the different kind of components of pollutants as a source of energy for itself and also break them into less toxic forms that are taken up by the rhizospheric microorganisms. Genetically modified organisms, they are also very important to for the removal of different kind of petroleums, naphthalene and toluene, benzene or other contaminants, forms of newer aspects of research with broad implications. So if you develop different kind of genetically modified organisms, that will also help in the removal of hydrocarbons. So thank you, that's all.